So welcome back to this first session after inauguration. एबे आमे जो उड़िया हिंदी इंग्राजी जोटारे भी आमे कथा हे परिबा विशेष करी हमर जो भाई मैंने आछंती बालेश्वर रु आउ चिकिटी रु तो निश्चित भाव रे उड़िया रे कहिबे आउ तेणु पूरा खुशी मनरे उड़िया रे सब कहे आप कहले मानने ये जा कहे आप ओडिया कहे आप कहले आम बंद करा कष्ट हम यार तो कौन कथा हवा से कथा एबे एबे जो आमर गोटे घंटा रही एक्जाक्ट गोटे घंटा आम कथा हवा कौन कौन समस्या अच्छी चाषरे आमर से जो माने कौन यूरिया को लेकिन विशेष करी पूरा ये भाषा देखले यूरिया को लेकिन कौन कौन समस्या अच्छी ताकू से समस्या कथा हेली कथा हवा ता परवर्ती तापर खाई सारा परे समस्याटा को कौन समाधान करी होबो से विषय आम कथा हवा समाधान कथा भूक पेटरे किसी कथा हेबनी सब नेगेटिव आसीबो सब कौन नहीं गणक मैंने पलि आसो खाइबा पूर्व जिते समस्या अच्छी आम खाली आलोचना करवा ताकू आमर माने वॉलंटियर माने अच्छी जो माने कि ताकू माने रखिबे ताकू सब लिखित आकार रखिबे रे तापरे जन जन का मु डाकिबी आपण चाहिले भी मझे मझे आसपारे सेमती ना जे माने ये को डाकिबे तापर आउ जन आसबे आपण जदि हाथ टेकिबे प्रथम आसबे हाथ न टेकिले आसबे ना कौन कहउजंती खाली आम समस्या उपर आलोचना करवा जोटा कि माने जो आमर यूरिया को पकई माने चाष चाष को यूरिया सहित कौन संपर्क अच्छे से यूरिया को लेकिन आमर समस्या कौन अच्छी आउ समस्या माटी सहित अच्छी समस्या आमर जो उत्पादन सहित अच्छी जोटा केते आमे प्रोड्यूस करूछंती केते माने आमर रिटर्न केते आसुची आमार आमदानी केते होउची ता उपरे समस्या माने सार को लेकिन सब सार को लेकिन सार पुणी विशेष करी यूरिया सार को लेकिन को आमको माने संपर्क रखिकी चाषर विभिन्न समय रे कौन कौन समस्या अच्छी आ चाष परर कौन समस्या भी अच्छी माने सार को लेकिन यूरिया सार को लेकिन तारि पर आम एबे आलोचना करवा आ समस्या उपरे समाधान उपरे आम खाई सारा परे आलोचना करवा सर हाँ सो मे बी माने यही रुचि रे आम डाकिबा जदि ता पूर्व आउ कई जने चाहिले कि कई जने चाहिले ना ता परवर्ती पर्याय रे आम कथा हवा हो पार प्रथम तो मु आशा करी डॉक्टर संगीता एंड डॉक्टर दिव्येंदु फ्रॉम एनआरआरए 1 by 1 देन मे बी डॉक्टर शाश्वत फ्रॉम यूएनडीपी देन विल आमर अच्छी एनजीओ भाई मैंने अच्छा निगमानंद स्वाई अच्छा सेवारू तापरे नंदकिशोर बाबू अच्छा तापरे आमर जो फार्मर मान माने चाषी मान को लेकिन जो आमर एपीओ जो अच्छी से अच्छा सुजीत जेना माने अच्छा आमर भोगराई फार्मर्स को फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन भोगराई फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन अच्छा आमर सुवर्णरेखारू जड़े आछंती भाई हाँ अच्छा कहे नहीं बे हाँ नीलचक्र कहे हाँ तापरे आमर देखा कौन फार माने आमर चाषी भाई माने जो अच्छा चिकिटरू जड़े तापरे बालेश्वर रु जड़े कहे तापरे लास्ट रे आमर जो पिला माने बसचंती पूरा एनर्जी सहकार ये बसचंती केटी ग्लोबल रु दीपाली स्वाई दिल्ली पब्लिक स्कूल रु रोहन एंड किट इंटरनेशनल आस्ताकर एतक अच्छा आम समय हूँ गोटे घंटा अच्छी तेणु किसी भावे जिते मुझे मझे टी टाणी पकेबी आपन को आप टाणी हो आपड़ आउ भिड़े तेणु समय 3 मिनिट 4 मिनिट लेखा कथा हवा ताठार अधिका कथा हवानी अधिका कथा हवा उपरबेला जिते पर्यंत कथा हे 4:30 जाए कथा है ताले विथ दिस आई विल इनवाइट संगीता मैडम थैंक यू
Good afternoon, everybody. I am Dr. Sangeeta Mahanti, Senior Scientist, National Rice Research Institute, Cuttack. Actually, I am working in nitrogen since my MSc, so I know the issues. So, what is like one major issue with the urea or nitrogen particularly? It's like the transformation process in the soil is very complex, highly complex. So we don't have actually any quantitative understanding of this transformation process. For the exact estimation of reactive nitrogen loss, it's not very robust. We have lot many uncertainties regarding the assessment of fate of nitrogen in soil, plant, and atmosphere nexus. That is one issue. Second is that regarding nitrogen footprint is one of the ecological footprint. Like carbon footprint estimation, for nitrogen footprint estimation, there is no standard methodology. Third, this is about the nitrogen management aspects. We know enhancing nitrogen use efficiency, like any other nutrient use efficiency, we can rely on that 4R approach, like right time, right dose, right place, right source. For nitrogen particularly, when we are talking about that precision nitrogen application, we are still in initial stage. We are trying for sensor-based applications or some drone-based application, but particularly application of this particular technology in a large scale in farmers' field is still long way to go. These are some of the issues I feel in the nitrogen management research should be looked into. And if you want to get some really address the problems related to nitrogen. Thank you. Thank you very much, Adhya sir and all the team for giving me the opportunity to participate in this nice workshop. Pardon? Yeah. So, I am Dibyendu Chatterjee, working as a senior scientist in soil science of National Rice Research Institute. So, and also I am working with this project since last 3 years. So, I can tell you a few problems which I feel and also be part of it, and sometimes I also find some of the solutions, but let us raise it. Like as a researchers, I found that the measurements in a proper way, the method and how to do it, how to do the calculations, and all these things are always not clear. I mean, when you join as a young and new researchers, maybe say I'm working, I'm privileged that I'm working in National Rice Research Institute, where already there are so many predecessors who have very good knowledge of measuring different fractions and the losses and all those quantifications they can make. But I think since nitrogen is already told by Dr. Raghuram sir that it is a big issues, and maybe we may be asked at any time that like carbon that maybe something will come. So in nationally we may have some plan to reach it or diffuse it to further more institutes, and for this maybe in our project also there is a provision of MOOC already in one that is the massive online course. But still I feel that maybe it may not be merely a course, maybe some practical experience, maybe some videos or something we can accumulate and distribute to other places, because I have seen many people ask me, I mean some of my juniors, like how to measure ammonia. It is really difficult. Sometimes you will see the method, you can see it, like many things you read in paper or some book, but when you are doing it practically there will be a lot of issues. Like for rice, we have somehow we have standardized how to measure it, so it is very difficult. So
I feel this training on the part of the measurement is one issue. And the second one, already part of it, Madam Sangeeta has already told. See, if we give nitrogen, definitely yield will increase. That's why people are applying, still applying and applying and applying. But there is a, a cut-off point where yield and, the economics, see, both things are to be considered. So any environmental impact and economics and environment and yield, these three factors has to come together and make some indices. Like in many research or science, we have seen they are making some indices by taking different factors into consideration. Then they are saying, okay, if this indices is up to this or up to that, maybe it is good practice or bad practice. So maybe we also in the nitrogen system, we also have to make some indices through which we can tell, okay, this method is good or this method is bad or this is acceptable or this is not acceptable. So these two particular issues I'd like to highlight. So thank you very much. Thank you, Dr. Dibyendu. Actually, some of the things we can discuss in the afternoon, some of the things we can reserve for our consumption maybe at a different levels. So in that way, we cannot assure that all the points will be discussed after lunch based on the certain things you have raised. Thank you. So now we will see the representative from UNDP, Dr. Saswat Kumar Pani. In fact, he was part of this team earlier. So welcome. So good morning everybody. So first of all, I'll thank to the entire mentor that who have guided us, and as I was a part of this SANH project, so it was indeed grateful to Professor Adya, Professor Shubudhi, Professor Raghuram, Professor Jaina, and the entire the fraternity in this project. So as I was looking mostly to the behavioral pattern, the knowledge, attitude and practices of the farmers, and also a part of my PhD work was mostly on sustainability. So as my the co-colleagues from particularly from NRRI, CRRI, they mentioned about the sustainability. We need to also understand that the sustainability kotha kohuchanti, it is not just the economic part or the environment part or the social part. There are other factors also there. Our sustainability को maintain करने को ले some way or the other हमको compromise करने को पड़ेगा, because when we are trying to increase or enhance the yield, हमको सेतेबेल को हम environment part को particularly we are trying to compromise with it. So the point here I'm bringing out is mostly the small marginal farmers, or we can just put here the sharecroppers जो मने अच्छे. I'm bringing out the issue here. The sharecroppers अच्छे हमारा, they don't, because से मने काठारु जमी नहीं चंती चाषो करिवा को तांकु उत्पादन करिके दबार अच्छी, and they will get their share part of it. So they don't think of the sustainability part. Okay, से भावनांती जे मो ए जमीरो जो health टा कौन होबो at a long run. तांकु भी उत्पादन करिवार अच्छी, सेति पाई से मने more fertilizers, particularly synthetic fertilizer, that too बहुत हाई मात्रा रे यूरिया पकई चल चंती. So I'll bring here this issue particular that needs to be discussed, that what can be done in this part. Okay, whether the right extension mechanism तांको पाखु पहुंची पारुची की नहीं, on time extension I will say, and the diffusion of the innovations and technologies. Particularly there are technologies like which my faculties from professors from NRI they mentioned, and there are also some other technologies like urea deep placement, where we have me, Professor Jaina and Professor Subudhi has worked in the context of Kalahandi. So whether the diffusion of innovations is really happening or not. So these are the issues, because when we are trying to put more and more of the fertilizers or the synthetic fertilizer, especially urea, कौन होची हमरा both economic cost and environmental cost बढ़ी चालुची.
बिकॉज इकोनॉमिक लॉस आम अधिक मात्रा यूज करूँ आम इकोनॉमिक आम पॉकेट रु पैसा जाऊँगी बट एज रिपोर्ट सेज ओनली 30% इज प्लांट नौची एंड रेस्ट 70% हैज बीन डिफ्यूज्ड सो से आकार रे देयर इज अ एनवायरमेंटल लॉस आल्सो तो एनवायरमेंटल कॉस्ट बढ़ी चलची सो वेदर दिस प्रॉब्लम इज बीइंग असेस्ड इन राइटली मैनर और नॉट तो दिस इज द इश्यू so after the session particularly post lunch this can be discussed thank you थैंक यू अति सहज रे कहवा गले गोटे इश्यू है जे जो नॉलेज एटीट्यूड प्रैक्टिस पर्टिकुलरली विथ रेस्पेक्ट टू शेयर क्रॉपिंग एटा गोटे जिनस आ गोटे जिनस कहले जो गुड प्रैक्टिसेस देयर आर डिफरेंट प्रैक्टिसेस whether it is being promoted or facilitated to expand it सेटा गोटे गोटे इश्यू थैंक यू तापरे आमे जीवा एबे उड़ीसा फाउंडेशन आमर अछंती निगमानंद स्वाई हैं एथर भूली गेला आगत तो भूली गेतला आपण बसी आनस कोन प्रारंभ आछन एडू आगत तो भूली गेतला Thank you. I think it's a big gathering, and myself, Dr. Nigavanand Swai, and I was representing one country program in Afghanistan. I was a senior scientist in International Agriculture Research Institute there, and in Delhi also we were looking at some programs in South Asia and China, looking at programs in India, Nepal, and Bangladesh. And recently we are operating in a trust named the Odisha Foundation, and it has started working with different government forums in Odisha. So it समस्त ओडिया बुझछन्ति ना सब किछि इंग्लिश अछन्ति ओडिया समस्त समस्त ओडिया काई ना हम चासी मन सब आछन्ति हम चासी घर तो हम आछछु आज जो कथावार्ता चलछि सकाळो आपण मैंने भी डायरेक्टली इनवॉल्व अच्छा गाँव में एपीओ बा फार्मर्स मध्यम मुख्य बिंदु हूँ प्रोब्लेम हूँ जे नाइट्रोजेन जो कहते समस्ते ये आमोनिया यूरिया सार तो यूरिया सार विषय समझ जानते आम 1985 मन मैट्रिक पास कला पूर्व आम घरटा निमापड़ा से जापान जड़े आसते से धाड़ी रुआ शिक्षा होता आमको धाड़ी रुआ ना धानटा धाड़ी केमती रम जेजे थे तम बहुत प्राइज मिलूला से गाई रखते हल्टीन गाई से समय हल्टीन गाई रखते जर्सी गाई रखते आबी होता मूला होता सोरिष होता उन्नत चाषी हिसाब से आमको बहुत प्राइज मिले आम भी से पाठ पढ़ुलु स्कूल को जाऊ स्कूल पलि आसला आम कम है जेजे बिल बिल को जीव सब पा दिहब गचरे गचरे पा दिहब कोबी लगाई से जो बर गच पत्र ठोला कर घोड़ी आई माने खराटा सका लगेला गचटा पोड़ीज ना गरम रे ताको पुणी उठे कि पानी दिहब से आमर सार व्यवस्था बहुत कम थिला तो आमको से ब्लॉक रू आसला गोबर गैस प्लांट करने किए कर गोबर गैस प्लांट ए स्वाई घर करेंगे स्वाई घर करेंगे आमर से चाष भल हुए से आमर जो डिजाइनर थे इंजीनियर से आसिक मीटिंग है गाँव में आम गाँव में प्राय 48-49 घर से गोटे डिजाइन देले आमर चाष जमी था 4 एकर ठीक अच्छे 3 एकर लो लैंड थिला धान पाई आउ 4 एकर खंड थिला ऊपर जमी जो पनीपरिया हुए जी चाषी घर आसते बुझीपे हाँ से बैगण अमुक समुक सब हुए तो से आसिले आम इंजीनियर सर ब्लॉक रू से कहले कि आप जी जमी अच्छी आती सार आप पकाउछन्ति आप गोटे यही साइज री डायमेंशन गोबर गैस प्लांट कले आपंकर गोबर गैस गैस बाहर घर रोसई हम आउ तार जो इफ्लुएंट तार जो बाहर तार आरपटे बाहर जीव गोबर गैसटा खत होगी आप जमी को पूरा पाइज गोटे या बहुत बड़ डिजाइन से करदे से जो कंक्रीट होता बहुत टाण कंक्रीट तापर गैस रे केमिति एते बड़ गोबर गैस होती ता भितर पसले तो गोबरटा गैस बाहर प्रेसर हेल्थ पुणी जीव तो आम समस्त भावुलु आम घरे जे आमर आ सार पकड़ा कमिज जहाँ जहाँ कथा होता ये गोबर गैस एत गोबर खत बाहर जे आम बोधे सब से
जमी कम लगे तापर एमती अवस्था है से गोबर ग्यास गोबर अंटिलानी आम घरे 6टा गाई थे जोड़े बलद थे आम गाँ सारा गोबर गोटिया गोटी आसला तो प्रथम तो फुल हो दरकार तापर जहाँ पड़ो ता बाहर प्रथम फुल करने आम पूरा सम गाँव में मीटिंग है भाई समस्ते जिते जहाँ गोबर अच्छी गाँव में घर घर समस्ते आनिक पकेब आम गोबर ग्यास टाँकी समस्ते आनी पकड़े सी भी पूर्ण होलानी माने एमती 7-8 दिन पड़ेगा खाली गोबर भर्ती करने पूरी पाख गाँ अलंधा नुआरिकी पाख गाँव सब गोबर सब बुआला कौन हो ना सर से स्वाई घर गोटे कर गोबर गैस प्लांट बायोगैस प्लांट से भरी हेल्ले गैस बाहर तापर से चा करके रोषे कर खाइबे आ प्लस से खत पड़ो से फाइनाली एमती अवस्था है सी गोबर किसी बाहरानी जहाँ बाहरला सीटा मैंने अल्प टिके बाहरला सी आम खत गदाटा से सरी जाम खत गदा सब चंछा चुची होगी रेडी रखाई बाहर पूर्ण हम आ बिलू जीव एमती है 20-25 दिन पर से इंजीनियर को डाकिलु सर कौन यहाँ है एवं स्ट्रक्चर 40 बस्ता 50 बस्ता सीमेंट खाली कंक्रीट ढल ऊपर राउंडटा टर्मटा भांगी भी हेनी एत टाण होता मस्जिद भाया होता तापर आम भाविलु जे आउ ये गोबर बाहर कि गैस बाहर सेठू कहले कलिकती दल आमर पोखरी जिते सब अच्छी नागफणी दल ताकू भी मिसेकी चपिंग कले भी हम से गोटे चपर टेकणा है समस्त से आम स्कूल आसले चपिंग कर पकेबू एमती से तो आम खाली देखू जे भितर खाली फुटफुट हो माने गैसटा फर्मेट हो बाहर बहुत कष्ट सब आड़ सिल कर रखाला आम तादे 2-3 थर चा करके पीचु माने आम घर से रोषे हो पारानी बहुत दिन पर मुझे पाठ पढ़ी ओयूटी पाठ पढ़ी पीएचडी सरला मोर भी किसी ज्ञानगत है मन पकड़ी से कथा जे एक्चुअली डिजाइनटा भूल थिला सेटा आमर जेतिकी थिला आमर घरे गाई गोरु तार जेतिकी कैपेसिटी हवा कथा सेमती बनायार थिला सी जो जे आसथिले आम इंजीनियर सर सी हिसाब कले जे आम जमी केते खत दरकार पड़ो से अनुसार बनीगला तापर से आस्ते आस्ते टेक्नोलोजी सल्व होगा आम भी गाँ को जाऊ आम से प्रोब्लेम फेस करूँ जे आम गाई गोरु संख्या भी गाँव में कमिलानी बहुत आम घरे आउ तो आम घर गाई गोरु ना तेणु आम बिल को सब डिमांड जिते दरकार पड़े क्रॉप फर्टिलाइजर डिमांड बा खाद्य सार डिमांड तार सोर्सटा हूँ प्रायतः केमिकल फर्टिलाइजर माने जो बजार सार आम पाखे आम जी खत पकाउलु मो पिला दिने देखुली एवं आम गाँ गोला गाई गोरु ना आम ओमफेड क्षीर किणी चा पीऊँ आम पाखे खत बोली गाँव में किसी ना कहार भी ना खाली आमर ना कहार भी ना तेणु आमर मुख्य सार है आमर केमिकल फर्टिलाइजर तेणु जोड़ा समस्ते कहले प्लस चैटर्जी बाबू भी कहले जे 70% आप जो बिल नहीं पकाउं गोटे पैकेट 50 किलो 50 किलो पकेले 30% से कहले 20% भावी दियो माने 10 किलो आप गछ नौ 40 किलोटा नष्ट ही होची सारटा यूरिया सार धरिकी आप पानी हाथ बढ़ी धड़क निजे मिल जाव थोड़ा थोड़ा हाथ थंडा लगे बोही जाइए तेणु सी क्विकली सॉइल माने वाटर रे पानी जे घोली होगी से पलैब आपण पकई आप बिल से बिल में पानी धार देकी जमी जाकि पोखरी पहुँच जाइए सेटा हूँ मोबाइल माने से स्थिर रही आउ गोटे जिनस से जल्दी डिनाइट्रिफिकेशन माने खरा पड़े गरम हेले से जल्दी नष्ट होगी वायुमंडल पलैब जोटा तार जो मुख्य जो यूरिया भितर जो अच्छी तार रस जोटा कहते नाइट्रोजेन आमोनिया जोटा कामर दब गछपाई कारण से ही सबूक प्रोटीन तैयारी हो नाइट्रोजेन नाइट्रोजेन आप प्रोटीन जो कहे पुष्टिसार से तैयारी हो नाइट्रोजेन से एत डेंजरस माने अवस्था समस्त कहले कार्बन ठू बहुत खतरनाक नाइट्रोजेन ठू NO2 ठू बहुत डेंजरस सब तो डेंजरस ठीक अच्छे किंतु नाइट्रोजेन ना आप प्रोटीन पुष्टिसार तैयारी हेनी पुष्टिसार तैयारी ना खाइबे कौन आप जुआड़े जी डॉक्टर कहे कौन खाद्य खाऊन कि घर टे भल खाऊन पुष्टिसार क्षीर टे पीऊन ये कौन से क्षीर हो मांस हो जहाँ हो ता भीतर जो अच्छी सार अंशटा सेटा हूँ आमोनिया तार तैयारी नाइट्रोजेन तैयारी ठीक अच्छे तेणु नाइट्रोजेन पकड़ा पड़ो पकड़ापी आम सोर्सटा आम चेंज हो कम्प्लेक्स जोटा थिला कंपोस्ट बेस्ड सी है बर्तमान आप डायरेक्ट नाइट्रोजेन एप्लिकेशन कराऊँ आ बहुत जल्दी पानी बोही जाऊे आई कीप माई टाइम
आई नो इट इज 1 मिनिट लेफ्ट सो आउ जल्दी उड़ी पलाଉଛି तो से उड़ी पलैले वायुमंडल प्रदूषण करुच्चे तलू को पलैले पानी प्रदूषण करुच्चे माछ मरी जाऊँ माछ खराब हो जाती पानी खराब हो जाऊँगी पुणी से खाली पानी रहुनी पुणी ग्राउंड वाटर को पलाଉଛି तलू पलाଉଛି ये है गोटे सारर मुख्य प्रोब्लेम तेणु नाइट्रोजेन यूज एफिशिएंसी जोटा आम कहे एनयूई तो नाइट्रोजेन केते एफिशिएंटली आम यूज कर डिबलिंग पोतवा डिप्लेसमेंट करवा एड़ा केते फिजिबल भी ना कहीं आम जो चाषी आम जो जमीबाड़ी अवस्था किए ताको पोतब गोटे लेबर दाम 300 टंका जमी पोतियापाई गछ काटापी आम सकाଳେ जाऊे लेबर आसुले 8टा बेले से कम करते 2टा 12टा गोटे पर्यंत पुणी आसुले पुणी 6टा पे कम करते एवं आसुँच 11:30 खाई पीकी घर पहुँचला बेलू 3टा पलाउं डाकिले आसवे ना ठीक ना सो हु विल सो डिप्लेसमेंट केते तले आम पोतवा किए ताको पोतब जो कॉस्ट एफिशिएंसी खाली नाइट्रोजन एफिशिएंसी ना नाइट्रोजन जो कॉस्ट एप्लिकेशन एफिशिएंसी ताकू भी देखा पड़ो सो कौ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाहर आम कि डायरेक्ट बाहर यूरिया और डीएपी जोड़े सोर्स जोठिक आमर नाइट्रोजन कंपोनेंटा गछ को मिलूँ तेणु से गुड़ाक एत जल्दी नष्ट हो जाऊँगी 70% खराब हो जाऊँगी तो केमी रोक जापर तार मेथड्स कौन आउ गोटे है मुख्य पॉल्यूशन है नाइट्रोजन सॉलिड वेस्ट जोड़ा आम भूलीगले पुणी केवल वायुमंडलटा यूरिया पॉल्यूशन होनी सॉलिड वेस्ट इज ए बिगेस्ट प्रोब्लेम जोटा भी आम सार प्रेजेंटेशन कहते सो यहाँ 12% रेट्रे बढ़ुची पॉल्यूशनटा माने प्रति वर्ष से 12% रेट्रे कंपाउंड ग्रोथ रेट्रे तार अच्छी आउ इट इज ए मेजर पॉल्यूटेंट कहीं समस्त घर यूरिनाल टॉयलेट सब पाइप जाई पड़ी ड्रेन रे से कुछ ट्रीटमेंट न हो कि पुणी पलाऊँ आप जो स्वेज लाइन जाकि नदी में पड़ जाऊँ नदी में पड़ी समुद्र पलाऊँ आम सब जगह मैला आम आम घर टी केवल सफा रखुचु जहाँ इच्छा हो पानी छाड़ दूचु समुद्र में मैला जिते पुरी मैला सब समुद्र में पहुँची जाऊँ तेणु आम समस्ते सॉलिड वेस्ट पर कहीं अवेयर ना इट्स ए मेजर प्रोब्लेम गाँ स्तर में हो सहर स्तर में हो घर जो आवर्जना मैला पानी पकेवा आम जुग जुग थिला पानी के मैला पकेबनी गोटे कौन ढेग थिला मन पड़ूनी जल में मल के पकेबनी पिला दिन थिला जेजे बापा मैंने शिखौले किंतु आम आजिकल सबू जिनस पानी फोड़ दूचु पानीटा आम एवं वाशरूम गलु पानी फ्लश कलु सी सीधा जाकि पानी सोर्स से मिसला सो नाइट्रोजेन आम मैला सॉलिड वेस्ट झाड़ा मल मूत्र जहाँ है हम डायरेक्ट जाकि पकईदे पानी रे सो माने सबू प्रोब्लेम गुड़ा होमें काली पर जो आसी रिपोर्ट आसाला आमर समुद्र पानीटा ब्लू होना समुद्र पानीटा ग्रीन हो गए कारण से एत परिमाण में जाऊँगी नाइट्रोजेन इफ्लुएंस से कि जाइए बिंदुसागर जो अच्छी लिंगराज मंदिर पाखे ता पानीटा नेली ना हलदिया माने पानी पानी कि ना जो बिंदुसागर थिला हाथ उठेदेव खाली आलजे खाली मैला कहीं से एत प्रकार रोचे अफ्लुएंट से पानीर पवित्रता ना से बहुत मैला हो गलानी ब्लू ग्रीन बीजे आलजे अमुक समुक हो गलानी तो समुद्र पानीटा भी ब्लू ना आउ से ग्रीन हो जाऊँ आस्ते आस्ते ये सब बहुत कारण सो दिज आर द इश्यूज मोस्टली नाइट्रोजेन केमी आम इफेक्टिवली क्रॉप रे पकेबा आउ जोड़ा धान आउ गहम कारण जिते नाइट्रोजेन पड़ुची 80% 70% नाइट्रोजेन अमोनिया पड़ुची गहम धान आउ गहम रे ताधरे केमी इफेक्टिवली यूज हम आउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जोटा यूएन एंड गवर्नमेंट दे आर टेकिंग ए बोल्ड स्टेप टू मैनेज सॉलिड वेस्ट तापर केमती करा केवल पॉलिसी लेवल हेनी दिस इज बोथ टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी सो ए गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट एनजीओज ऑल स्टेक होल्डर दरकार अच्छी आउ जो स्टूडेंट्स मैंने आसछन्ति जो मैंने शिक्षा दरकार जे आम केमिति केयरफुल रहबू नॉट टू पॉल्यूट एनवायरनमेंट कहीं खाली पढ़िले एनवायरनमेंट पॉल्यूशन अटकीबनी वी हैव टू एक्ट जे मु आज दिन सारा केते पॉल्यूशन कम करछि मु आज पानी रे कौन पकई देछि मु आज कौन करछि सेगुडा सब हम चिंता करिया पड़िबो सो डिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ डिटर्जेंट एंड माने वाटर रे जहाँ ता फिनाइल ता वाटर रे आम एसिड बहुत जिन पकाऊ डायरेक्ट तक फ्लश करूँ सिस्टम को सो ऑल दिज आर कजिंग ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम so it's a complex basically it is not a problem so thank you all I think lot of things are there to discuss but etiki ame rakhiba and we will meet again thank you
धन्यवाद सर मो सम्बलपुर विश्वविद्यालय समाजशास्त्र पढ़ाऊली एवं से समय शेष बेलू को सेवा ऑर्गेनाइजेशन सहित मिसिली एवं जो से 2006 ता पूर्व जो इंडस्ट्रियलाइजेशन से आरंभ होता पश्चिम ओडिशा रे आम गोटे स्टडी करूँ इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्री ऑन एग्रीकल्चर छोटिया स्टडीटे आ तार ना टाइटल दिखाई ड्रीमिंग द डेथ आ मुझे समाज विज्ञान पढ़ुली गोटे नुआ कोर्स इंट्रोड्यूस करी सोशियोलॉजी ऑफ एनवायरनमेंट से एनवायरमेंटल पोल्यूशन कथा भी पढ़ुली आउ ये जो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट आम समस्ते जाचु आपण मैंने टिके दुख प्रकाश करें चाषी मान को मिसगाइड कर एग्रीकल्चर साइंटिस्ट कारण स्वाधीनता पर ये जो उत्पादन बढ़ेवा आत्मनिर्भरशील हवा ये साराटा शिखेला किए साइंटिस्ट मैंने ही शिखे आमती अभ्यास तो कर सरकार नीति एमती सब्सिडी देकरी सार बांटुंट चारिड़े चाषी मैंने सार जो बिक्री होमती भाव में गदा होकर रोचे से इवन लाठी चार्ज भी होरण निहाती नवा दरकार आम ये चर्चा करुचु वी आर ऑल लर्न पर्सन्स साइंटिस्ट एंड यंग साइंटिस्ट किंतु केते जन जाइए चाषी सहित मिशिचु चाषी जानिले जे सार पकई 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 आउ आग को जाई परिबानी माटी नष्ट हो गलानी माटी आमर नाही आउ से बायोडाइवर्सिटी चाष हो पारिबनी किंतु तथापि से माने पकाउछन्ती तेणु आम चाषी मानक जोटा गोटे कहते मैंने सोसाइटी सहित लिंकेज चाषी सहित लिंकेज आमर बहुत कम आम समस्ते बाड़ी बैगण पोथी बैगण बाड़ी बैगण हवापाई चाहिनु करूँ वर्तमान जहाँ भी हो मु रिटायर्ड है 2013 रु मु निज गाँव को जाइए ऑर्गेनिक फार्मिंग करुच्ची एवं सेवा जेहेतु गोटे लक्ष्य चली जे आम विषमुक्त शस्य उत्पादन करूँ एवं आम लोक आम खावाक देवु प्रथम एक्सपोर्ट क्वालिटी नुह जी पार एवं आम पाखापाखि 4टा ब्लॉक रे 3-4 हजार चाषी सहित काम करुचु एवं सेठी प्योरली ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कहले आम बेसिकली गुरुत्व दौचु गो आधारित कृषि सार न पकईकरी रासायनिक सार न पकईकरी आमर जो हांडी खत जीवामृत बीजामृत इत्यादि इत्यादि ताकू व्यवहार करी केमती करहब गत प्राय 2015 रु यहाँ आम आरंभ होती 6000 फार्मर्स सहित काम करुचु एवं असुविधा रोचे से जगह जोटी सब्सिडी सार मिलूँ लोक को आमको भी कहते जे आप जो गोटे कंपनी तैयारी करुचु आमर जी कंसल्टेंट से कहते आप सार से कंपनी को दौना सार बिक्री कर आम कहूँ ना से सार आम नबुनि तेणु असुविधा ये रोचे ये समस्याटा को केमती डील करेंगे साइंटिस्ट मैंने चिंता करूँ जे साइंटिस्ट एंड गवर्नमेंट सरकार या सहित कौन केमती संपर्क करके इजी अवेलेबिलिटी कर दौरान पाखे सब्सिडी दौरान सार रे चाषी कहीं नेबेनी जे मु एक्जाक्टली जानी कि सब्सिडी दौरान सार माने तो यहाँ यही समस्या मु तो नाइट्रोजेन आम मु जानी नी सार ये फास्ट टाइम जानी जे नाइट्रोजेन भी गोटे पॉल्यूटेंट बोलिकी आम लोक चाषी को शिखौचु जे धान चाष कर सारापर से डाली जातीय चाष किसी कर नाइट्रोजेन बढ़ बोलिकी आम केमिकल नाइट्रोजेन कथा केवे पका बोल चाषी को कहूनु यहाँ आमर लक्ष्य एवं बर्तमान आम कृषि संजीवनी जोटे से भावुलु चाषी इंडस्ट्रियल एरिया रे माने ड्रीमिंग द डेथ कहतुलु एवं बर्तमान आम ताकू कृषि संजीवनी बोलिक ना देचु एवं विभिन्न ऑर्गेनिक सार किंबा औषध हिसाब से चाषी पाखे पहुँचाई चेष्टा करूँ किछटा पहुँचाइलु धन्यवाद धन्यवाद महाकोट सर आपण जोटा गोटे कहले गोटे जिनस खाली जो साइंटिस्ट कथा कहते कि विशेषज्ञ माने जो माने गवेषक माने आउ सरकार दीटा अलग जिनस
सरकार केउ आड़ को नौची माने कमती ताकू व्यवहार करुच्ची सेटा गोटे अलग जिनिस तापर भी चिंता करा जाई पारे किंतु पाणिग्राही बाबू आपण को एनर्जी लेवलटा मते देखिकी जना पड़ुची खाइबा पूर्व जी एनर्जी बाहरलानी खाइबा परे केते बाहरिबो ठीक अच्छे आम देखा खाइबा परे देखियोनी आसीबा आपण एबे भी टिके आसंतु हाँ आसंतु आसंतु टिके आसंतु ना टिके आपण तो आसलानी आसंतु 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 हाँ दीटा खाली गुटे दीटा इश्यू कहीकि जातु तापर देखिया उपरवाला नमस्कार सार कहले चाषी विषय ये चाषी की सार सरकार सब्सिडी दौरान कहते किसी दौन सर आगे 50 केजी सार को 170 टका था बर्तमान 600 टका सर आगे 50 केजी बर्तमान 45 केजी सर ब्लैक तो 600 टका बर्तमान आगे आउ सार ये गोबर खत यूरिया पकाया द्वारा जमी भी खराब होची सार ये गोबर खत देले चाषटा भल हम माटी कमल रहिबो एति कही सर प्रोड्यूसर ग्रुप नमस्कार मु बालेश्वर जिला बालियापाल ब्लॉक नीलचक्र एफर सभापति रवींद्रनाथ प्रधान वर्तमान आम काली गोटे एटी थिला मोर ओईटी रे प्रोग्राम थिला आम एफए मन को डकाई जे सेठू होइकी आम जेहेतु ये यूनिवर्सिटी हूँ किट यूनिवर्सिटी आम तो पाठ पढ़ीनु कि केवे देखी नथिलु जाओ बहुत आनंद लगिला एत बड़ यूनिवर्सिटी आम आसिकी उपस्थित होइछु किछि सुनिबा किछि जानिबा जेहेतु माने एटी बहुत डॉक्टरेट करचंती रिसर्च करचंती साइंटिस्ट माने एटी बाहरचंती हमर सुरक्षा पई जाओ बहुत भल कथा वर्तमान सार जो टॉपिक देइचंती माने गोटे कथार दुईटी माने विपरीत कथा एवं समस्या और तार समाधान समाधानटा उपरली जेहेतु आलोचना करवा बर्तमान समस्या यूरिया द्वारा कौन आम समस्या होची से टॉपिक उपर मु केतरा साधारण कथा आम गाँ भूई जेहेतु आम एफओ करूँ 500 चाषी मान को लेकिन आमर एफओ मेम्बर 6टा पंचायत रे एवं चाषी मानकर जो यूरिया पाई जो व्याकुलता सरकार सब्सिडी देवा पाखु माने यूरियाटा सब आमर आवश्यकता होची किंतु यार समस्या कौन प्रथम कहबी साधारण कथा आम जो चाष करी खाऊचे परिबा साग फल जेकोसी गछ जोटारे यूरिया अधिका दौचे से फल हो साग हो अधिक दिन रोना हठात पचि जाउछि माने प्राक्टिकली आम अनुभव जोटा सार अधिका दि जाउछि से खाद्य अल्प दिन में नष्ट हो जाउछि एवं तार स्वाद कमुछि माने मुख्य माने जेटा कि अनुभूतिर कथा स्वाद कमुची एवं अल्प दिन व्यवहार रोचे से मैंने पचि जाऊँगी सब क्षेत्र में एवं देखो धान जो धान में आम अधिक यूरिया दौचे से चाउल पखाल लाड़ुआ लगुच माने तार टेस्टी नाई एवं से पखाल भल लगुना जोटारे अल्प माने देसी धान चाष करछे अल्प सार दौचे तार चाउल जो मुढ़ी आमर तो बालियापाल सेपटे साइड मुढ़ी बेसी माने खाई खिया जाए कि जोटा माने किना धान सरकारी धान जेटा अधिक दिखाई से मुढ़ी भजा जाए ना आमर जोटा लोकल धान तार जो खाइले तार जो माने देहर स्वास्थ्य पक्षे जो माने स्ट्रेंथ आसो माने से सार दिया खाइले जो कहते ना एवं कहते ए सार सार दिया खिया छुआ पर एक स्ट्रेंथ कहीं जो कथा
ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ସେମାନେ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ଯଦି ବସିଛେ ଏଠି 100 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଦେଖାଯିବ ଏଠି ହୁଏତ ଅଧିକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଭୂଇଁରେ ଦେଖିବା 1000 ଜଣ ମାନେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 90% ହେଉଛନ୍ତି ଏଇ ଚାଷ ଚାଷୀ ମାନେ ଏଇହାରି ଭିତରେ ଆମେ ରହୁଛେ ଆଉ 10% କିଏ ବିଜନେସ୍ କିଏ ଚାକିରି ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଆମେ 90% ଲୋକ ଯଦି ଏଇ ଦିଗରେ ସଚେତନ ହେବା ତେବେ ଯାଇ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ କହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚାଷୀର ଯେଉଁ ତାର କଥାଟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ବହୁତ କିନ୍ତୁ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ଆମର ଅଧିକ ଦରକାର କାହିଁକିନା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ଆମେ ଅଧିକ ଅମଳ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସାର ଅଧିକା ପକାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ସେ ଦିଗକୁ ଯାଉନି ସେ ତ ସମାଧାନ କଥା ଅଛି କ'ଣ କରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ହେଉଛି ଆମର ସମସ୍ୟାଟା ଯେ ଜାଣିଲେ ଏକରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟର ଏଇ ସବୁ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଦୁଇରେ ଆମର ମାଟି ଦେଖୁন ଯେଉଁ ଅଧିକ ସାର ଯେଉଁ ଚାଷ ଆମେ କରୁଛେ ଅଧିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରିଦେଉଛେ ଯେଉଁ ଜମିରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କରୁଛେ ତାକୁ ଯଦି ସେଇ ଅନୁପାତରେ ସାର ପରିମାଣ ନ ବଢ଼ାଉଛେ ସେଥିରେ ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ହେଉନାହିଁ ମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ସାର ମାନେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେ ମାଟିରେ ଆଉ ଚାଷ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ମାଟି ମଧ୍ୟ ସେ ଖରାପ କରୁଛି ତାପରେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଖରାପ କରୁଛି ମାଟି ଖରାପ ହେଉଛି ପାଣି ଖରାପ ହେଉଛି ଆମେ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ଖାଉଛେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖରାପ ଆକାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଏହିସବୁ ୟୁରିଆ ଏବଂ ୟୁରିଆ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆମର ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଯେଉଁ ଚାଷ କରୁଛେ ଚାଷର ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଚାଷୀ ଲସ୍ କରାଉଛି ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ତାର ଆଗ୍ରହ କମିଯାଉଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାରର ବ୍ୟବହାର ଅଧିକ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଭଲ ଲାଭ ମାନେ ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳିଆ ଆମକୁ ସିଏ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାନେ ତାର କବଳରେ କବଳିତ କରାଉଛି ଏବଂ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ ଭଳିଆ ସିଏ କାମ କରୁଛି ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏମିତି ତ ବହୁତ ମାନେ ସେମିନାର ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 2 ଦିନିଆ ଏଠି ରହିଛି ଏଇଟା ইয়ার যে সারাংশ বা ইয়ার যে সল্যুশন ইয়ার যে কিছু জিষ্ট বাহারিব এই আলোচনার সেইটা কার্যকারী পাই যদি কিছু পদক্ষেপ নিয়া যাআন্তা সরকার লেভেলে বা আমার জিলা স্তরীয় বা রাজ্য স্তরীয় যেকোনসি লেভেলে চাষী মানকর কিছু কামরে লাগিলা ভলিয়া যদি সল্যুশন কিছু বাহার করি কার্যকারী করা যাআন্তা তেবে নিশ্চিত আমি উপকৃত হন্তু এতিকই রହୁଛି ধন্যবাদ নমস্কার नमस्कार आज यूनिवर्सिटी रे आमे चाषी हिसाब से बसी पार्छु ये सौभाग्य बालेश्वर जिला बस्ता ब्लॉक पूर्णचंद्र जेना कृषक साथी एवं जड़े कृषक सब्जेक्ट एक्चुअली सार देइचंती जे यूरिया रो डिमेरिट्स किंतु मु चाषी हिसाब से जहाँ माने जानुची यूरिया हूँ पॉजिटिव तार नेगेटिव अंश किसी ना सरकार हो बा आपणकर आज सब्जेक्ट हो आपण मैंने कहते प्रैक्टिकली गोटे घुंट जोड़ा 4 ढिसमिल कह जाए मुझर रबी चाष 166 केजी 500 धान अमल कर केवल नाइट्रोजेन आपणर जेते सार अच्छी ना गोटे घुंट 4 ढिसमिल जोटा कह जाऊँ 4 ढिसमिल नाइट्रोजेन यूरिया आइदर एमोनिया आपको यूज कले आम यदि 4टा कि 5टा गछ देक रुचे से 40 रु 50 गछ पिल देवार क्षमता अच्छी अन्य सार ना जोड़ा आप कहते 30% जमीन नौ कि 20% उड़ी जाऊँगी एक्चुअली से आपणकर जोड़ा कौच पोथी बैगण कथा कहुच्छी किंतु बाड़ी बैगण
नाइट्रोजन जदि न देबे आपण डीएपी दियंतु अदर सार जहाँ दियंतु एते पिलो शक्ति कहा पाखरे नाही तेणु अमल अधिका होउची जहाद्वारा सरकार मध्य आमर राज्य सरकार 3-4 थर अधिक अमलक्षम देश जेटा ओडिशा आज गर्वित केवल मैक्सिमम नाइट्रोजन पाई जदि नाइट्रोजन को बंद कर दिया जाए जो साइंटिस्ट मैंने कहते यार डिमेरिटा क्षति बढ़ुची देशर ये ताहले यार विकल्प सार जेपर्यंत न बाहरी ताहले नाइट्रोजन जदि बंद कर दिया जाए ओडिशा पुणी से 20 वर्ष पछकू पछे जीव जे कि अमलक्षम कमिज ओडिशा तेणु विशेष समय नेमी ना तेणु सार नाइट्रोजन बहुत डिमेरिट्स अच्छी जदि आपको बंद करा जाए माने परिवेश प्रदूषण जदि आमर होउची यार विकल्प सार जमती आपणकर डीए आपण ग्रूमर सहित नाइट्रोजन रोची सेमिति को सार सहित जदि आपको अटैचमेंट करी चाषी की जोगे दिखाता ताले चाषी बेनिफिट पाते द्वितीय कथा खाली गोटे कह गोटे मिनट मात्र नेबी जो चाषी जो उत्पादन करुची एक्चुअली ता पाखरे मेथड पहुँची पारुना जाइतिले मैडम कही आम घर को जाइए से उपस्थित से मैडम जी चाषी की जो माने तार एक्चुअली कौन कौ समय तार ट्रीटमेंट कृषि क्षेत्र में पहुँची पारना शेष से निराश ही सार दुकान की जाकि विकल में कहूँ यहाँ कौ धान एथर रबी चाष आपणकर गोटे भाइरस है कांधी जस्ट धान वाला कांधी पाखर मरीगला मेडिसिन नाई कोविड टाइप रकम तार मेडिसिन नाई 100 एकर नष्ट हो गला राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो बा साइंटिस्ट माने हो बा औषध बिक्री कर्ता माने हो कही पारे ना जे यार उपशम औषध कौन अच्छी ये दुखर कथा तेणु मो आज बड़ माने जो आलोचना चक्र रे मु अनुरोध करुछु समस्त साइंटिस्ट मानक बा कृषि अग्रगति जो मैंने आगे नौ जे एक्चुअली उड़ीसा रे जदि चाषी पाखरे ठीक समय ठीक औषध प्रयोग कर व्यवस्था सार को माने व्यवहार करिवार व्यवस्था ब्लॉक स्तर रे पंचायत स्तर रे एवं डोर टू डोर जदि यार कैंपेनिंग करके पहुंचाता ताले भारत वर्ष ने विश्व रे ओडिशा 1 नंबर हो बोली मो आशा वर्षा करछि मो वक्तव्य को विराम दोछि जय हिंद जय जगन्नाथ पिलामानकु एबे डाकिबा रे दे आर एक्चुअली रियली फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री फॉर दिस होल यूनिवर्स सो नाउ लेट अस इनवाइट दीपाली स्वाई फ्रॉम KIIT ग्लोबल A very good afternoon to everybody present over here. This is Deepali Soing from KIIT Global School, standing here to present to put forward my opinions on the excess use of nitrogenous fertilizers and its pollutative role in the environment. As the segment of this discussion, this is the first segment where we raise our issues. So for the first issues that I will raise is that due to the use of excess nitrogenous fertilizers from the nearby agricultural lands, it can make its way easily into the nearby water bodies and pollute it. Now when it comes to water bodies, there are an entire inbuilt ecosystem inside the water. For example, the mini microorganisms that live there. As urea is a very reactive nitrogen, or we make it, or we say it as a reactive nitrogen, it is very soluble into the water and get itself mixed into the water and harm the entire ecosystem. For example, starting with the mini microscopes, let it be phytoplanktons, who observe their resources from the water, that gets affected and due to the mixture of urea into the water, and then the zooplanktons that eat the phytoplanktons, they get their food as affected, and hence it continues until the small fishes and large fishes. And the birds, the fish-eating birds, consume the very small fishes that are
has a high concentration of nitrate in the body, which increases the nitrogen level in their body as well. Now, from the biomagnification theory, we can say that the nitrogen concentration level increases tropic level or gets multiplied 10 times. Hence, the concentration of nitrogen from just by the fertilizers get increased to a high level that makes it a very harmful effect in every microbes or be it the occupants of planets. Okay, now comes the consumption. Now the birds that consume the very fish that has the high nitrate concentration, they get affected. It adversely affects their calcium metabolism, which leads to thinning of their eggs, breaking of their eggs in premature areas, and so on. Hence, declines in bird populations as well. The next issue that I would raise would be on human health. Now, the small fishes are consumed by us as well, and the concentration of nitrogen becomes high in our body, and which can also lead to blue baby syndrome as a disease mentioned by our ma'am, and then hypoxia, in which the oxygen level is completely deprived in humans' body. Now, as mentioned by all the farmers, that urea is somehow helpful for them. In the process of making urea, there are many harmful gases that are released from the industrial area, which can make it a greenhouse gases that entraps heat or which has the 300% more potent than carbon. Hence, we say that carbon may not last for long, but nitrogen can be a very harmful effects in the greenhouse gases. Now, we know why we all are gathered here. Due to the green revolution, we had to use nitrogenous fertilizer to increase our production because of the growth in population or to put up with the high food demands. Likewise, but the excess use of nitrogenous fertilizers can be really harmful. We all are gathered to find a solution that is undoubtedly have not been found yet, but we all are researching. It is not that we can never find it, right? We all are engaging our minds, brainstorming it to at least land at a potent solutions, and all the farmers are gathered here to continue it as well. Hence, I would like to say that. Hence, I would like to end this discussion in the saying that we humans have always emerged victorious, be it any problems, and I also hope that this will be one of those issues that we have raised, overcome victoriously. Thank you. Thank you, Deepali. Now we can have Rohan from DPS, Delhi Public School. Warm good afternoon to one and all present here. I am Rohan Mitra from DPSK. So, as you all know, we have gathered here to discuss on the issues that has been caused due to nitrogen pollution due to the excess use of artificial fertilizers in farming. Now, as it has been mentioned earlier also, due to the green revolution, in order to increase the agricultural product and become self-dependent, as it was initiated by the government of India after independence, a lot of focus was done on the utilization of artificial fertilizers, which initially was indeed beneficial and over the years has very highly affected in a good way the agricultural product. However, as today we see, due to the excess of artificial nitrogen in the nature, many issues are being faced and it may increase, and that is what we are here to discuss on. So, nitrogen itself is not quite harmful because it's essentially quite needed by all organisms, but certain compounds of nitrogen like NOx, nitrogen oxide, nitrogen dioxides, these are really harmful, and essentially they are created by mixing with the carbon and methane effluents that are present in the biosphere around us. Moreover, in the atmosphere also these gases can be really harmful directly upon breathing. Other than that, these also lead to the depletion of ozone in the upper atmosphere
or the stratosphere, where it is very essential as it blocks all the harmful UV rays coming from the sun and thereby preventing any bad effect on all organism present on earth. Other than that, it also promotes the growth of ozone in the lower layer of atmosphere, which is very harmful because ozone by itself is quite a poisonous gas and can cause breathing issues like asthma itself, which leads to multiple death every year. So that's what I had to raise. Thank you very much. Thank you, Rohan Mitra. Ruhan. Okay, I'm sorry. Okay, thank you. So last but not the least in this series is Astha Kaur from KIIT International School. A very good morning, a good afternoon to one and all present over here. So I'm Astha Kaur from KIIT, and here I would start my speech in English, but I will end it in a note which will be understandable by everyone present over here. Agriculture. Well, when we are here talking about accessing and managing nitrogen sustainability, here we are also talking about reaching the 17 Sustainable Development Goals, particularly Sustainable Development Goal number 2, which talks about ending hunger and which is related to sustainable agricultural practices, and also Sustainable Development Goal number 13, which talks about climate action, the environment, the climate action plan which every country, and starting from our individual efforts that needs to be taken in order to stop the impact, the harmful impacts of it which we are facing on our everyday basis. Now, efficient use of nitrogen in agriculture involves practices that minimize nitrogen waste while maximizing crop production. Broadly speaking, this concept is about reducing environmental pollution, saving the nutritious value from the soil, and enhancing sustainable agricultural practices. Now, the problems which we are discussing here are that there are various technological advances present and practices which can be used in fields like use of urea super granules and nitrification or inhibitors based on neem products improves nitrogen use efficiency. However, these methods are not really popular among the farmers as they use the conventional ways of agriculture, and many countries, especially in India, where agriculture is very prominent and is used in a very vast way. So here we need to understand how we can make it more familiar and more convenient for the people who are in the grassroots level, the people who are actually working in the fields. Now, comprehensive policies and frameworks for sustainable agriculture practices should be designed in such a way, keeping in mind that the stakeholders like the farmers, the field workers, and the government and the NGOs who are working for their betterment and for the better production are keeping in mind all these holistic developments and issues, and hence catering to their needs accordingly. Now, coming to my point, as students, एटा हमर गोटे common notion होची कि आमे elite schools रू जेहेतु आमे आसुचु आमे disconnected रहउचु कोन real life issues होची हमर जो कृषि माने होचंती तांकर problems कोन होची आमे केमिति जानिबा एई प्लेटफॉर्म माध्यम रे हमको ए गोटे awareness मिलुची कि केमिति problems गुडा आमे solve करिबा को निहाती दरकार आमे textbook knowledge हमर knowledge textbook रे सीमित अछि बट आमे केमिति सेटा बढ़ी पारिबा सेटा हमर की रोल होची जेहेतु आमे स्टेक होल्डर्स मीट रे अच्छु हमर मेन एम एटा होची कि हाउ वी आर एबल टू कनेक्ट विथ दीस ग्रासरूट स्टेक होल्डर्स हाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड हमर जो आइडियाज एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस अछि सेटा से माने केमिति तांको लाइव्स रे तांकर ऑक्युपेशन रे इंप्लीमेंट करि पारिबे तांकर जो नाइट्रोजन रे प्रॉब्लम ता होची हाउ वी आर सपोज्ड टू एड्रेस इट दिस इज व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर थैंक यू सो मच Thank you, Astha. Maybe I'll request Professor Tapan Kumar Adya to offer our token of love to all these three children because they spoke really well.
who are not given, they should not think that they are losers. Huh? They on behalf of this school. We have got time limitation, so it's okay. I think I can tell loudly. Even now I take classes, so nothing to worry. I really like Astha's one point is that more closer interaction between the producers and consumers. I think that's a really good issue which we should take. Rohan's point is very well taken. That is the atmospheric pollution. NOx and I think that's very good. And Deepala's, I think, is one interesting thing is that overuse of fertilizer leading to loss using more fertilizer, so there is a loss, and both the quality of the soil, especially the biodiversity and other things, I think that's also a very important point. So on our behalf, I think please come here and then maybe this thing. So congratulations for the nice presentation, and we want some new issues to come. And these are some of the things interesting things. You can give one. No. Please come here. Please come here. Thank you. Thank you. So now actually for a symbolic way we will release from the again other young men's the T-shirt. So sir, let us release. So I can invite here Mr. Partha Sarathi Atya, please come. Because he should be released by the young men. Please come. Please, it is for everybody. You will get, all of you will get this T-shirt. This just to show this thing how it is. You will show it. It will learn, may not teach you, but you will see that. No, it's okay. You can show it to you. Yes, I did. All are invited for lunch. That is downstairs. Volunteers will go right. Same time. Hi, Ani. Just have a look our participants, audience. For you, we are showing. Requesting our cameraman to show you the audience. Oh. Is it visible? Yeah, I can see everyone. Good to see you. Student volunteers, say hi. Hi. Oh, brilliant. Lots of people. Ani Brilliant. from UK. Oh, thank you. Over to you. Okay, shall I get started? Are we all ready? Yeah. I just got to share my presentation, if that's okay. 1 minute for this. Or less than. Please be careful. Volunteers. Can you see the screen? Are my slides showing? Yes. Perfect. Okay, I'll just get started because we haven't got so much time, but thank you again to everyone for coming back after the lunch. It's good to see so many of you there. It's a pleasure for me to be able to talk to you today, and I have to apologise that that's not in person because it's difficult for me to travel at this moment, but thankfully we have technology. I'm permitted to interrupt you for a second. Okay. I have a submission request to you. Sure. You continue to tell for 1-2 minutes. Have a pause. As we have got few participants, farmers, they might not understand you. With your permission, we will translate in our local language. Then we will request you to continue. Is that okay? Please check. Are you muted? Yeah, happy to do that. Okay. Please start. Okay. Maybe after 1-2 minutes, just wait. We'll be translating your instructions.
Sure. Okay. Even more reason to keep to the point. But yeah, it was just to say thank you to everyone for being here, and apologies for not being myself there in person. But I'm thankful still for this opportunity to talk to you. So I'll just carry on for another minute. My role here is to introduce the activities that we're doing this afternoon, which is stakeholder mapping and nitrogen stories. And I will just go to my next slide. So yeah, as I said, there's two activities. So we'll spend the first hour for the stakeholder mapping, and then the second hour for the nitrogen storytelling, where Pete Ritchie, who is also online, will come in to describe what's in mind for this activity at 3:30, I think it is. Shall I leave it there for the Okay. translation? Okay. So ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଏବେ କଥା ହେବେ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଟେନସନ୍ ପ୍ଲିଜ୍, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମକୁ ଏବେ କଥା ହେବେ ସେପଟରୁ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଦି ଭାଗରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟଟା ଦିଆଯାଉଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କାମ କରିବା 15 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଜଣେ କହିବେ ସେଇଟାର କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଡକୁମେଣ୍ଟ କରିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଆଉ ଜଣେ କହିବେ. ହଁ ପ୍ଲିଜ୍ ସାନି ପ୍ଲିଜ୍. Thank you. Yeah, and so the reason we want to do this is to, raise awareness of the challenges of nitrogen management, which I'm sure which you've heard about this morning, and also work towards building kind of like an inclusive stakeholder platform and network, in order to consider decisions around and actions for around sustainable nitrogen management. So in SANH, the South Asian Nitrogen Hub, we've been working, across the countries in South Asia to do these kind of activities, which has been a real priority. So it's not just about disseminating the evidence, but it's about developing shared understanding and knowledge, which then provides the opportunity for moving forward on action around nitrogen. Thank you. Over to you. ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆମେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରୁଥିବାକୁ ନେଇକି, କିଏ ସିଧାସିଧି ଭାବେ ଚାଷର କରୁଛନ୍ତି, କିଏ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିଏ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ଆମର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି. ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଆମେ ବସିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଅଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଚାର୍ଟ ପେପର ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ କାମ କରିବା. ପ୍ରଥମେ ସେଇଟାରେ ଆମେ କାମ କରିବା, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କୋଣରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟ ପେପର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମର ସେଇଟା ହେଇଛି, ଆମେ ସେମିତି କରିବାରେ. ୟେସ୍, ଓଭର ଟୁ ଆନି. Okay, thank you. So I don't know the word stakeholder, if that's familiar to you, but basically it just refers to a group of individuals, organisations and associations. And for this workshop, it means those who have an interest or effect or can be affected by nitrogen management decisions in agriculture in Odisha. And so we're looking at questions in this particular activity, like who are those stakeholders, who are affected and can affect decisions, and try to understand more about the relative influence that the different stakeholders could have in these areas, and likewise to understand the relative interest and concern. And so I don't need to move too far ahead, but it was just, in order to do that, we want to introduce stakeholder mapping as a tool to understand this. So basically, we have a 3x3 grid. I don't know if you have these on your table, I hope so. If not, you can create one. But with this, we can put post-it notes of stakeholders onto the matrix to understand relative to each other how much influence and interest different stakeholders have.
So we have high to low, and yeah, this is just a tool to then have those discussions around why people have these different positions. Thank you. So I think this is the time to take a pause. So can you please show? This is the actually the same chart paper is prepared for this process which will start after your orientation. What we'll do, this is already orientation is given to the facilitators. So that part will be discussed in local language here. Followed by, I think the same thing, the second chart which is also prepared here, subsequent slide is also covered. So let us now save time to skip this slide also. This is also prepared. Thank you. Okay. So just quickly, so I've only got 3 more slides. Why we want to do this? I mean, I discussed the objectives, but it's to highlight where natural scientists can measure and understand impacts of nitrogen pollution, and quantitatively assess this. It doesn't necessarily help us to understand why certain people make certain decisions that lead to those actions and impacts. So this process is really to identify who are those actors, their interest and influence around nitrogen management in agriculture, and get a better understanding of those dynamics. And as I said before, this is to also support and inform us how we move forward with future engagement, not only as researchers, but as everyone here in this room, how we can work together. So again, I think the facilitators will cover this, but it was just, again, to just quickly discuss in order to make those discussions constructive. We just need to keep some things in mind, that we respect the privacy and not refer to people by name outside of this workshop and put certain remarks to those people. We create a respectful environment. We want to hear from everyone in the room. So this is an opportunity to do that, not just those who have certain authorities in certain areas. So this should be an inclusive environment, and the facilitator is tasked to keep us to time and to keep the focus, and hopefully we can all practice some active listening in this environment, so we're all listening to each other and paying attention to make the most of this activity and hearing from each other. So maybe it's just time to get started. So as I said, we just need to sort of think about time. First step is the introductions, then the stakeholder identification, and then the mapping exercise for 15 minutes. So this is using that grid and discussing why. And then hopefully we'll have time to also hear back from certain groups. And then at 3:20, 3:30, we'll move on to the next activity where Pete will come in. So over to you. That's a lot to translate, I'm afraid. Thank you. Thank you. So in fact, the whole team we had in the morning session, we are together. So one kind of interaction we already completed that, but definitely I think we will complete on time this process, whichever is prepared, and maybe as it is mentioned, 5 minutes it will take to clarify by the facilitator to this different categories of members in each table. So in fact, we have 7 to 8 members in each table from different categories. Thank you. That's perfect. Okay, well, thank you, and I hope you all learn a lot from each other, and I'll stay online if you need me, but yeah, now it's time to get started. Thank you. So can we now over to Pete? Hello, Professor Pete. Oh, sorry. Okay. Are you ready to begin? No, I think if there any further question is there, we will take care here, Annie. Okay, yeah, absolutely. And I think Pete is also in, to share something about storytelling. I think Pete will explain the other activity and just give a bit of an introduction at 3:30 if that's okay. So I think it'll work better so people can focus on the mapping. So, okay.
Is that okay, Professor Jenner, if I come back I'll listen in, but come back at 3:30 and talk about the storytelling at 3:30? So actually what we suggest, please give your input. We will continue on the same table depending on the flow of discussion. There itself we can record and we have discussed that part. So please put your input so that we can continue up to 4:30 covering these things depending on the whatever input is coming. That's absolutely fine, Professor Jenner, and I can just say something now about stories and why that's important, and then you can manage your own time in the group. So that's absolutely fine with us. Yes, thank you. Good. So thank you so much for inviting me, and I thought that the talks this morning from the stakeholders were very interesting and relevant. Do you need to translate? Thank you. So se कहउछन्ती सकाळे जो हमरो आलोचना हेतिला माने इनागुरेशन रे ता परे जो हेतिला बहुत बढ़िया हेतिला इंटरेस्टिंग हेतिला यार. So it's the young people who spoke were very impressive about different reasons why nitrogen really matters. So जो मैंने बहुत young minds and other categories they are actually contributing. से मैंने उटे भल्लो कहूतले भल्लो मैंने ओजनदार जिनसो कहले आउ एटा बहुत interesting है इच. विशेष कर पिला मैंने जो मैंने आस्तेले भल्लो कहले. In particular, Aska's comment at the end, she said, we have to make it more familiar and convenient to people who are actually working in the fields. बढ़िया जिनसटा कहले जे जो लोक मानक सहित गाँव रे रहुतबार चासी मानक सहित जो कनेक्ट माने संपर्क रखिबाटा सेटा होची बहुत बड़ लागला तांको. So हमर जो stories Yes, first of all, thank you for acknowledging the fact that I brought the point that we need to get more involved, us as the youth, in the field work, how they are working, what are their problems, and knowing the root causes, because just having bookish knowledge is not enough, and hence I was, going in the point by saying that we need to have more awareness about what's happening around us, and, research more, connect to people, to society, and then talk about the real life problems. So thank you for having us here. Thank you. And stories are a really good way of making things familiar and convenient because they spread from one person to another. So a good story is like when you throw a stone on a river, and you throw a flat stone on a river and it bounces, and every time it bounces it makes more ripples. That's a good story. And a bad story is a round stone, you throw it in the river and it just falls to the bottom. से गुटे बल कथा कहले जे आपण मानक अभिज्ञतारू जो बहुत माने गुटे अभिज्ञता अच्छी से अभिज्ञतारू गुटे कौनसी गुटे इश्यू को नहीं कि किंबा कौनसी गुटे से जो समस्या को नहीं कि किंबा समाधान को नहीं कि गुटे गप आकार रे कहबे प्रथम रु शेष पर्यंत सेटा कहले गुटे बहुत भल लागिवो सेटा भी विभिन्न लोकों को पाखरे जाई कि भी पहुंचबारे सेटा गुटे प्रत्येक टेबल रु किछि किछि से आशा करचुंती सेमिति आसीबो हमर जो आलोचना भितरे आम अभिज्ञता रू आम एक्सपीरियंस माने जो विभिन्न जगह आम काम करचुंती आमर चासी भाई माने जो मानकर तांको निज अभिज्ञता रू किछि गप आकार मूलरू शेष पर्यंत गुटे जिनिस को कहिवे आ सेटा को आमे ताकू कोन नोट करके रखिबा कि रेकॉर्ड करिवा प्रत्येक टेबल ले रेकॉर्डिंग भी सुविधा हैजी सेटा करिया को से चाहउचंती. Yes, please. So when we're thinking about a good story, we have to know what is our audience. Is it a farmer? Is it a policy maker? Is it an NGO? Is it someone who works in the fertilizer industry? से कहवा कथा जे प्रत्येक जो हमर वर्गर अछंती एठी सेटा कहला बेल को जना पड़ियो प्रत्येक वर्गर लोक मानकर कोन माने मतामत कोन अछि
ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି. Yes, please. And we have to think, what do we want our audience to know? What do we want them to feel? And what do we want them to do? Yes, please continue. We'll take care. Okay, so this idea about know, feel, and do is really important. It's not enough to know something. People have to feel something from the story and then be motivated to do something. ଏଇଟା ସେ କହିବା କଥା ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଗପ ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଣିଲେ ଯେଉଁ ସତ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ କେସ୍ ହାଉସ୍ ନେଲେ ତା ଫିଲିଂଟା ବେଟର ହେବ. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେଉଁ ଲେଖିବାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଖିବାଟା ଆଉ ୟାର ଲେଖିବାର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବ. ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି, ଏଠି ନୁହେଁ ଯେଉଁଠି ବି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ବି ପଢ଼ିଲେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ହେଉଛି. ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ସକାଳେ ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଗବେଷକମାନେ ଲେଖିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲେଖାର ଯେଉଁ ପଢ଼ିବା ଲୋକ ଅଲଗା, ଫିଲ୍ କରିବା ଲୋକ ବି ଅଲଗା ଅଲଗା ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଆସିବ କ'ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୋଟେ ଆସିବ. ୟେସ୍ ପ୍ଲିଜ୍. So, for example, a farmer needs to feel that they are safe, they can still make a living, but waste less nitrogen. But they have to feel safe. Yes, please continue. I'll just take care of maybe at the end. Okay, so that's all I really want to say is think about your audience, how to make the story come alive. A good story has a twist in it. It has some unexpected events in it. So I'll just give you one example. When I started in this work, I was listening to Professor Mark Sutton, who was talking this morning. And he told me this story of going out into the field with some policymakers, civil servants. And they looked on the trees, and the trees were all covered with a green lichen, green growth on the side of the tree. Okay? And he said, look at these trees. And they said, yeah, they always look like that. And he realized they didn't know what a healthy tree would look like. The trees all had lichen because there was too much nitrogen in the atmosphere. But they had never seen a healthy tree in that neighborhood. So that story has stayed with me because often we think we have the same expectations or the same experience as other people. And we have to realize sometimes our experience is very different. And that was a good way of seeing that the policymakers didn't see the problem right in front of their noses, but Mark saw it. So that was it. For me, that story is helpful to remember how do we communicate. So ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପଲିସି ମେକର ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ବଡ଼ ଧରଣରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତେ ଲେଖିଲେ ବି ସେ ତ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିବ, ତାଠାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେବ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବା ଗୋଟେ ଗପ ହିସାବରେ ରଖିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି. ଆଉ ଗବେଷଣା ଭିତ୍ତିକ ଲେଖା ଆସି ତ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗପ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜିନିଷଟାକୁ ଲେଖିକି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ କେଉଁଠି ନିୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଲାଗିବ. ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଆଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗପ ହିସାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା ମୂଳରୁ ଶେଷ ଯାଏ. ୟେସ୍, ଓଭର ଟୁ ୟୁ. Okay, thank you very much, Professor Jenner. That's all I have to say. Good luck with the exercise. It's nice to see you all there. I see Tapan there as well. I hope you have a really great day, and I look forward to reading the reports. Thank you very much. Thank you very much. So now, thank you both of you. Now let us start with this process in each table with all the preparatory note facilitators and the note takers. Thank you.
So now over to all the facilitators and note takers, but I'll take just half a minute, maybe little less than half minute, 29 seconds. So thing is, you have two sets of information. One particular 10 points, one side. ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ର ଗୋଟେ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହାତ ଦେଖ ହଁ ଏଇ ହାତ ଦେଖୁନୁ ହଁ so yes so those 10 points ସେଇ 10ଟା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମର ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଗର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ପାର୍ଟିସିପାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେବୁଲରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ କେଉଁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମତାମତ ଆସୁଛି ବା କ'ଣ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ତାକୁ ଲେଖିବା 10ଟା ଯାକ ପଏଣ୍ଟ ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସିଟ୍ ଅଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ସିଟ୍କୁ ଆମେ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପ୍ରଥମ ସିଟ୍ଟା ହେଉଛି ଯେଉଁ 6ଟା ଘର ଅଛି ତାପର ସିଟ୍ଟା 9ଟା ଘର ଅଛି କି ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଡିଟେଲ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇଟାକୁ କଭର କରିବା ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କଭର କରିଦେବା ପ୍ରଥମେ ୟାରି ଭିତରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ 10ଟା ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ କଭର ହେଇଯିବ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାପିଂଟା କଭର କରିଦେଇକି ତାପରେ ରିଜିନ୍ସ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ କେତେଟା ବାକି ଥିବ ସେଇଟା ସାରିଦେବା ହେଲା ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ ସାର୍ ନାଉ ମାନେ ସମୟ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା जोटी फैसिलिटेटर को प्रॉब्लम हो कह चलो प्रथमे से जो स्टिकी पेपर के आलोचना कर सारी स्टिकी पेपर मार यही जिनसटा को भी सही ड्र कर दे पारिबो हाँ यस टेबुल सीढ़ी को दियो मु दे दूँ टेबुल फसल डैमेज कला बाहर केमिकल पेस्टिसाइड यूज करने बाध्य हो पेस्ट लगी तो से यूरिया को जी कम कर धान हुईस धान बेसी परिमाण दिया हुए बेसी परिमाण यूज होवल आम मोनोक्रॉपिंग सिस्टम जदिव नुह क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन ना एजुकेशन दिया आमको जोड़े आसिक बुझा जेहतु आप बुझे ना आप जन कहला कि पकई दियो कि आम यहाँ बुझे
केमी लॉस हो तो आम से जानवा एमती लॉस हो आम स्टॉप करदेवा आम यूज कर पैसा चाहिए जमी नहीं जाए कहीं आम जमी किसी बाहर करने ना आम किसी भी यूज करके यस सर मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया बढ़ जाए तो क्या होगा फिर तो होगा मिट्टी में ज़्यादा फिक्स्ड नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट आउ लाइवलीहुड कंटिन्यू करने लाइक एते भी ब्रॉड फॉर एग्जांपल हम पॉपुलेशन जिते अच्छी से हिसाब से समस्त इंडिविजुअली जे प्रीच करनी कि आम एते यूज करानी एंड आप जानते कि लार्जेस्ट सेक्टर एग्रीकल्चर सो लाइक गवर्नमेंट भी एते इनिशिएटिव regarding that they are being provided with manuals regarding that they are being provided with manuals well data भी gap है कि most of the cases से एकदम भी असली पॉलिसी की मामलों को मैनुअल यूज करना चाहिए फर्टिलाइजर यूज करना से माने मोस्ट ऑफ द केसेस में मैनुअल पढ़िबे फॉर जेंति आपण कहले आपर से दोटा कवर फास्ट रोला बेले यूरिया एलपी पर क्या सल्यूसन जो बाहर यदि वैज्ञानिक कि रिसर्च आमको जो दिए आम से लोक बाहर पहुँचा जब आप